Hello everyone, welcome to Aptplus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. These are the two important newspapers that is relevant for your examination. So the news that I'll be discussing today would be from these two newspapers. So let's get started with the topic first. Today's 6th of September. The first topic is Nipah virus reappear in Kozhikode in Kerala. Second, startup escalator scheme by the IT ministry. We'll see the detail of this scheme. Third, states told to identify the fake vaccine amid the concern that was raised by WHO. The government of India has also raised some concern regarding the fake vaccines. Second last, states warned of aggressive infiltrations. And the last is an editorial from the Hindu, the judicial role in improving the lawmaking, right? So this is an important editorial that talks about how the parliament efficacy can be increased. Apart from this, at the end of this video, there would be some MCQ based questions, and these questions would be based on current affairs that will help you in the upcoming part of the prelims examination. Those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptplus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. So starting with the first news of the day, that is Nipah reappear in the Kozhikode, Kerala. This is something which is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health. So in this news, we'll try to understand what exactly is Nipah virus and how its reappearance is causing a concern. So after a gap of 3 years, this is not new that the cases was not reported. Earlier, 3 years before also, 3 years ago, the cases were reported. And the case of zoonotic Nipah virus was reported recently in the Kozhikode district of Kerala. So a 12-year boy was died. He belonged to the area called Pazhoor, in the private hospital he died. And वहाँ के खास करके इस तरह के जो cases report हुए हैं, जो state health administration या फिर जो state health ministry है, they have prepared a contract list for 188 person, because one person who has died, one child who has died, many people who have come in contact with him would be definitely need to be traced, because tracing इस तरह के वायरस केसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो स्टेट के हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक चार्ट प्रिपेयर किया है. 188 लिस्ट ऑफ पर्सनस है, उसमें ज़्यादातर लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं. So they have prepared a list, and a total of 20 of them have been termed as high contact group, right? So this is the right time. If this number is also very less, not very much. So if we compare to जहाँ पे अगर आपने कोरोना वायरस के केसेस देखोगे, it was first started in Kerala only. So we need to control. गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जितने भी लोगों ने इस इंडिविजुअल के कॉन्ट्रैक्ट में आए या फिर जो भी ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन है वो वापस किसी के कॉन्ट्रैक्ट में है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जा सके, सो दैट दीज वायरस कैन नॉट एक्सकेलेट. नाउ सेकेंड टाइम रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस, कोझिकोड में ये केसेस जो हैं, दिस वाज रिपोर्टेड फॉर द सेकेंड टाइम. ये एक डेडली इन्फेक्शन वायरस है दैट वाज रिपोर्टेड आफ्टर अ स्पैन ऑफ 3 years. And 18 lab have confirmed with 7 suspected, 1 reported from the district in May 2018, right? So it's 2021 and the case was reported 3 years before, that is on 2018. So the couple was infected with the nearby Mamallapuram district. Mamallapuram was there in the name also. I mean, it was recently in the news, not recently, very recently, when Chinese premier visited India. He was there in Mamallapuram. At that point of time, this place was of importance. And there were 16 lab confirmed death cases that were reported death and 7 suspected that, right? तो कुछ lab confirmed death भी report किए गए हैं, कुछ suspected death भी report किए गए थे उस time पे. Now, what is Nipah virus? What are the features? Because for examination it is important. तो एक zoonotic disease है, zoonotic virus है. Zoonotic means इस तरह से उसकी जो ट्रांसमिशन है दैट इज फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. ऐसी कोई भी वायरस जो एनिमल को अपनी ट्रांसमीटर बना के देन दे एंटर इनटू द ह्यूमन इज कॉल्ड एज अ zoonotic वायरस. बात करें अगर ऑर्गेनिज्म की विच काउज Nipah वायरस इज कॉल्ड Nipah virus encephalitis, is an RNA or ribonucleic acid virus. So it is being asked in examination. They can confuse you with DNA or RNA. So if there is MCQ question, you have to mark RNA and DNA would be the wrong answer. It first appeared in the domestic pig,
right? It has been found including several species of domestic animal, including dog, cats, goat, horse, and sheep. And in this, chicken is not there. So make sure आप इसके बारे में पता रखें, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. Now, transmission of virus, how does this happen? So the virus is transmitted from people to animal and can also be passed through the contaminated food directly from person to person. एक इंडिविजुअल से भी ट्रांसफर की जा सकती है. एक इन्फेक्टेड पर्सन कई लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं. सो इंडिविजुअल पर्सन हैज अ कैपेसिटी and has eligibility that he can transfer to many other people. So fruit bat is considered to be the natural reservoir of this virus. So this is again something which is very important. Fruit bat would be the animal, or you can say it's a natural reservoir of this virus. Symptoms include acute encephalitis and respiratory illness. So these are the two major symptoms that is being witnessed in a patient who is infected with the Nipah virus. Now the second news from Indian Express, a startup escalator scheme for IT ministry. This is something which is important for general studies paper 2, welfare scheme for the vulnerable section of the population by the center and the states. So Ministry of Electronics और Information Technology ने recently decide किया कि वो 10 members panel बनाएंगे to formulate प्रोसेस जहाँ पे वो एग्जिस्ट करेंगे कि जो स्टार्टअप एक्सकेलेटर्स हैं उनको खास करके ज़्यादा मौका मिले. दे नीड टू बी गिवन मोर प्रायोरिटी एंड मोर स्टार्टअप एक्सकेलेटर कैन कम इनटू एक्शन. सो दिस वुड सेलेक्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप जहाँ वो कोशिश करेंगे टू स्केल अप द प्रॉब्लम क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट. बाय पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट आई मीन कि जो स्टार्टअप के जो नंबर्स है वो इंक्रीज किए जाएंगे, इकोनॉमी में उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी. The panel would be led by the Ministry of Electronic and Information Technology के जो secretary है Mr. Ajay Prakashwani would be the heading the panel. Why I have named him? Because in many examination apart from UPSC if you appear they directly ask the name of a chairperson. तो यहाँ पे important है कि आप एक नाम भी याद कर लें. Now implementing agency की अगर बात करें, which is the agency which is implementing or looking for the nodal agency. So MIT, Ministry of Electronic and Technology would be implementing it. The Startup Hub program would be implementing by them. And it will take the equity in startup applied to the scheme for qualifying the grant, right? उसके अलग procedures हैं, will let you know what are the criteria. Or investment would be done either through the promissory of simple agreement for the future equity, which would be the on a safe, इसको safe भी कहते हैं, simple agreement for future equity. So this is the methodology that would be used. टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, इसमें 100 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट अलाउड है फॉर नेक्स्ट 3 years दैट हैज बीन प्लान्ड बाय द मिनिस्ट्री दैट इज मॉनिटरिंग द स्टार्टअप एंड द एक्सकेलेटर्स. ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम की, व्हाट गवर्नमेंट ट्राइंग टू अचीव विद दिस? ऑब्जेक्टिव इज समथिंग व्हिच इज वेरी मच रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन आल्सो, राइट? सो ऑन अगस्त 25 IT मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि जो स्टार्टअप एक्सकेलेटर्स हैं उनमें खास करके वो प्रोडक्ट इनोवेशंस, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ और समृद्ध को आइडेंटिफाई करेंगे. where 300 startup would be there. They would be connecting to customers and investors, right? एक international immersion होगी on the next 3 years so that the domestic consumer as well as the international consumer can trade and it can have a global representation and presence in the market. And as a part of this program, a part of selecting the startup, जो IT मिनिस्ट्री उन्होंने कहा है कि जो एक्सकेलेटर्स हैं they would be built with the customized accelerator program and they would need to select the startups, right? जो पूरी aim है of the scheme is to develop an ecosystem. एक इस तरह की ecosystem, एक environment बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे एक robust startup acceleration हो सके, जो opportunity provide करे for a well-funded startup which can work with the Indian needs. So Indian की जो ज़रूरत है जहाँ पे वैक्यूम है जिस सेक्टर पे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे टॉयज मैन्युफैक्चरिंग हो, if you talk about any other pharmaceutical manufacturing, if you talk about defense manufacturing, there are many sort of vacuum which is there that need to be fulfilled with this escalators or startup escalators program. फिनेंशियल एड की बात की गई है. स्टार्टअप एक्सकेलेटर्स जो होंगे उनको 20 लाख रुपए तक की रकम दी जाएगी. दिस इज द अमाउंट दैट वुड बी गिवन टू देम टू डेवलप अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ द स्टार्टअप टू पिक अप बाय अ मेंटर. And the escalator to qualify would under the scheme must have the business of incubation for last 3 years. कोई नए इंक्यूबेटर्स को अभी इनिशियली गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है.
they should have a prior experience before they come into the financial aid, and supporting them supported for more than 50 startup. कुछ categories रखी गई हैं, उनमें startups allow किए जाएंगे, which at least has 10 should be received from the non-public investment. Now these escalators जो होंगे, they must be having their operation in India, और बहुत सारे उनके जो space और infrastructure है, they would be carried out in the startup, right? So what government is trying, जो financial aid है वो उन ज़रूरतमंद लोगों को दी जाए, so that it can create a lot more opportunities not only for the country, but at the same time it create an employment opportunity for the other people as well, right? Now states told to identify fake vaccines. This is something which is important for General Studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors. So Ministry of Health ने recently जो WHO की guideline है, WHO has warned regarding the counterfeit, जो false vaccine है, जो falsified है, उस तरह के जो vaccines हैं उनको identify किया, and they said that these vaccines are in circulation in many countries, right? तो WHO ने warn किया है, खास करके जो South Asian और African countries हैं उनमें कोविशील्ड की counterfeit, false, bogus ये इस तरह की जो vaccines है वो available है. So the health ministry has written to all the states and union territory to identify the falsified or counterfeit Covishield vaccine which is available of India. और इसकी जो confirmation है वो Serum Institute of India ने की हुई है. Identifications methods की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने कहा है कि the center would be providing an identification original label of 3 vaccines. अब इंडिया में 3 वैक्सीन एडमिनिस्टर हो रही है presently. The first being the Covishield, other Covaxin and Sputnik V. ये 3 वैक्सीन थे, उनके जो स्पेशल लोगो है या फिर जो सीक्रेट कोड है, they would be sharing with the state government so that they can identify कि कौन सी वैक्सीन ओरिजिनल है और कौन सी वैक्सीन डुप्लीकेट, right? So the ministry has issued the guideline to ensure fake COVID-19 vaccines are not administered in India because that would be of no any use. So you can see these 3 images of the vaccines, right? You can make people aware also, to your known people, you can let them know what actually and how does the vaccine look. It can give a brief idea. So this is an image of Covishield, which is being developed by the Serum Institute of India. This is Covaxin, which was developed by Bharat Biotech, and the other is Sputnik V. This is developed by the Galmia Institute of Virology in Russia. Right, so these are the 3 important vaccines that is being administered in the country. Confirmation of falsified vaccines की अगर बात करें तो WHO ने already confirm किया कि अफ्रीकन रीजन में, साउथ एशियन रीजन में ये वैक्सीन पाई जा रही हैं, and the falsified products were reported in WHO in July and August. और जो इसकी जो जेन्युइनिटी है उस वैक्सीन को लेकर के जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी कंफर्म किया है कि कई ऐसे फॉल्सिफाइड वैक्सीन जो उनके प्लांट में मैन्युफैक्चर्स नहीं हुए वो भी सर्कुलेशंस में. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉजिंग अ ग्रेट कंसर्न, एंड दीज फॉल्सिफाइड प्रोडक्ट हैव बीन रिपोर्टेड इन द पेशेंट्स ऑफ युगांडा, इंडिया एंड म्यांमार. Now states warned of aggressive infiltrations. This is for General Studies paper 3, challenges to internal security through communications network. अभी जिस तरह से अफगानिस्तान में सिचुएशंस हुई हैं, राइट, सो द सिचुएशन इज नॉट वेरी, द जेस्चर्स ऑफ अफगानिस्तान एंड तालिबान इज नॉट ग्रेट फॉर इंडिया. द इन्फिल्ट्रेशन कैन टेक प्लेस, सो वी डेफिनेटली नीड टू कंट्रोल एंड टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स. सो यूनियन गवर्नमेंट की जो सेंट्रल एजेंसीज उन्होंने वार्न किया है कि कुछ मिलिटेंट ऐसे हैं जो अफगानिस्तान बॉर्डर से इंडिया में इंटर कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ वीक पोरस सिक्योरिटी इन दैट बॉर्डर एरिया. So amid that, government has raised the security over there, and this security is again being deployed by many paramilitary forces. तो सेंट्रल एजेंसी ने अलर्ट किया है सारे स्टेट्स को, जितने भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं उनको क्वेश्चंस किया है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो हो सकती है इन कोलैबोरेशन विद द इस्लामिक स्टेट्स, खास करके जो खोरसान प्रोविंस है वहाँ पे, एंड लश्कर तोयबा वुड बी ऑपरेटिंग देयर. एट द सेम टाइम दीज 2 एंटिटी, Lashkar Toiba and Jaishe Mohammed, are trying to infiltrate in the Jammu and Kashmir area, right? And it is being vaguely argued कि ये जो लोग हैं कश्मीर की तरफ आ सकते हैं, they can come into infiltration and they can attempt to do anything in that particular area.
So government is taking all its precautionary measures. एंड द कंसर्न हैज़ बिन रेज्ड, इंडिया ने ये कंसर्न रेज किया कि जो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स है खास करके अफगानिस्तान के, उनमें से कई लोगों को अभी रिसेंटली वहाँ के जो तालिबान के फोर्सेज उन्होंने उनको छोड़ा है, दे हैव रिलीज मेनी ऑफ द पीपल एंड सिक्योरिटी बिकम एक्सट्रीमली पोरस आफ्टर द यूएस फोर्सेज दैट हैव लेफ्ट अफगानिस्तान कंप्लीटली. नाउ देयर इज नो मोर सिक्योरिटी फोर्सेज फ्रॉम यूएस मरीन और यूएस सिक्योरिटी फोर्सेज से कोई भी फोर्सेज अफगानिस्तान में अब नहीं है, देयर इज नो मोर फोर्सेज, राइट. सो द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स इन द जेल, जो भी ऐसे लोग थे आईएस के लोग या फिर जो भी टेररिस्ट ग्रुप के लोग वहाँ पे ऑलरेडी प्रिजनर में थे, उन सारे लोगों को छोड़ दिया गया है. दैट इज अ ग्रेट कंसर्न फॉर इंडिया बिकॉज दीज नंबर ऑफ पीपल कैन ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एंड दे कैन create chaos in the country like India, specifically in the Jammu Kashmir region. And this would be organized crime with a transnational network, smuggling of drug, because जो poppy seeds हैं या फिर opium की जो सबसे ज़्यादा productions है वो अफगानिस्तान region में है, उसके बारे में counterfeit of Indian currency, weapons and so on can be the problem that can exist after these people coming into the mainstream. Now, इंडिया ने कहा है कि हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है. इंडिया हैव बीफ्ड देयर सिक्योरिटी पर्सनल. इन्होंने कहा है कि जितने भी स्टेट के वीवीआईपीज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दैट नीड टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, उनकी सिक्योरिटी को एक्सक्लेट करने की ज़रूरत है, उनके सिक्योरिटी लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है. एंड द साइबर क्राइम पुलिस वेर ऑल्सो आस्क्ड टू कीप विजिल, जहाँ पे कुछ भी ऐसे जो कम्युनल या सेंसिटिव कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल ना हो पाए. दे नीड टू कंट्रोल इट, राइट. And CAPF would coordinate with the state administration to enhance the security based perceived on the threat level. और international border की बात करें, जो coastal districts हैं, that would also be strengthened with adequate checkpoints. Combating operations vulnerable area would be intensified. खास करके वैसे border area जो दूसरे countries के साथ में उनकी merge करती है या फिर जो adjacent है उस country के, उन border areas पे भी खासा ध्यान रखा जा रहा है. Now, the judicial role in improving the law making. This is a very important editorial which would be very much important for your mains examination, right? So this is something which is important for your general studies paper 2. It's structure, organization, function of judiciary and executive. So इस editorial में कुछ important 5 subheads है जो मैंने आपके लिए segregate किया हुआ है. First is measuring the parliament efficacy, evaluation of legislative process. आधार की एक केस के बारे में देखेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. Doctrines of presumptions of constitutionality and remedying the dysfunctions. So इस पूरी editorial की जो theme है that is law making and challenges. Law making में क्या law making किस तरह से होनी चाहिए और उसमें क्या क्या challenges हैं जो अभी के law making में exist करते हैं. सो बात की गई है जिस तरह से पार्लियामेंट की जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेटोरेशन हुई है. ओवर द टाइम हमें ज़रूरत है कि इसमें रिफॉर्म लाई जाए विथ अ गुड स्टेक होल्डर कमिंग इनटू द पार्लियामेंट. सो दिस कंसर्न वाज रेज्ड बाय द CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिस्टर NV रमन्ना. उन्होंने कहा था कि बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी हो रही है जो भी लॉ पास हो रहे हैं पार्लियामेंट से, दैट इज़ क्रिएटेड एन ऑब्वियस प्रॉब्लम और उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, राइट. अवॉइडेबल लिटिगेशंस इज कमिंग बिकॉज ऑफ द बिल दैट इज बीइंग पास्ड विदाउट कंसल्टेशन और विदाउट कंसिडरिंग द स्टेक होल्डर्स, राइट. सो दे हैव रेज कंसर्न कि जो बिल पास हो रही है उसके हर एक पहलू को जांचा जाना चाहिए, परखा जाना चाहिए. While the CGI suggests that the lawmaker and individuals should enter into the public life, इसने जो CGI ने सजेस्ट किया है जो भी जो लॉयर्स हैं और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको पब्लिक लाइफ मतलब पॉलिटिक्स में या फिर किसी दूसरे तरीके से अपनी पार्टिसिपेशन दिखानी चाहिए. और इन्होंने कहा कि जुडिशरी कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन इम्प्रूविंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस. सो इनडायरेक्टली ही वांटेड टू से द मोर एंड मोर लॉयर and the people who are actually aware of the constitutional, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जिसके बारे में लोगों को जानकारी है, वैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में एंटर करें, राइट. देयर इज अनदर वे टू मेक देम एंटर थ्रू द राज्यसभा. नाउ मेजरिंग द पार्लियामेंट एफिकेसी किस तरह से मेजर की जा सकती है. जो एक नॉर्मल प्रोसीजर्स होती हैं, जितने ज़्यादा बिल पास हुए उनसे कहा जाता है कि एफिकेसी कितनी रही पार्लियामेंट की, वी मेजर दैट. बट in this editorial the author want to say कि सिर्फ नंबर ऑफ बिल पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ बिल will not suffice the need. We need to understand the quality that is impacting the life of the people.
However, this measure the flawed and does not account for whatever is lost, right? यहाँ ज़रूरी है कि without adequate notice or deliberations के चीज़ों को pass नहीं किया जाए, and the bill which is being passed should actually be benefiting the people of this country. And legislator or a representative of the people are expected to exercise the duty before they cast their vote. तो हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है, even as a voter you have a right that you can choose, and when you choose someone, make a caution, be thorough with the individual whom you are going to vote. Now coming to the evaluating legislative process, judiciary के बारे में कहेगी कि judiciary can play a very important role where it can provide and improving the law making process and can secure the ideas. Because what happened whenever a law is being passed, अगर उसमें कोई खामियां है, उसकी जो स्क्रूटनी अगर पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं करती या फिर उसके ज़्यादा पर डिस्कशन नहीं हुए, then it finally land to the Supreme Court or in any court of law. So it is important कि उसकी अच्छे से उसकी स्क्रूटिनाइज की जा सके, उसके जो इम्पैक्ट है, उसके जो रिपरकशन है, that need to be understood. And a straightforward way of doing this is by enforcing the text and spirit of the constitutional provisions, right? So there is a specific procedure that is mentioned in the constitution. We have 3 lists that is mentioned in the constitution. First is the concurrent list, then we have state list, then we have center list, right? तो इन लिस्ट में अलग अलग कैटेगरीज को बताए गए हैं. 15 फिनेंस कमीशन ने भी अपने रिकमेंडेशन दिए हैं स्टेट्स को लेकर के. इफ यू नो व्हाट 15 कमीशन हैज रिकमेंडेड, do let me know in the comment section down below. And constitutional contains several detailed provisions that how to carry out and how the law must be passed. Unfortunately, ये बताई गई है कि जो state legislative assemblies है, even for the parliament, they are not actually being done carefully और उसको undermine किया जा रहा है. आधार केस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने आधार के एग्जाम्पल्स लेते हुए कहा कि जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई थी लोगों को. So however, this provision can only be seriously taken if judiciary address their violation on timely manner. Ultimately, the role of judiciary become pivotal. And longer the challenges is pending, the more ground for the state rightist obligation create a law that should be disturbed merely the procedure of violations. The doctrine of presumptions and constitutionality की बात की गई है. So what is this? This type of question is important for your mains or even for essay that can ask you. So the doctrine can also make deliberate factors जहाँ पे ये एम्प्लॉय की जा सकती है कि बेसिकली जो प्रिजम्पशन ऑफ कंस्टिट्यूशनैलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोर आइडियाज हैं, उनको ही पाइवोटल मानना चाहिए, उनको ही सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए. So that this doctrine requires the court to exercise the restraint and defer to the legislative judgment in a reasonable rule of law. And the law passed by the parliament without any deliberation, without examining the empirical basis, which should not be premised. तो states के लिए चाहे वो पार्लियामेंट हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनको सारे restrictions क्या क्या हैं उसको समझने की जरूरत है. They heavily need to rely upon the doctrine of presumption of constitutionality and resist to the close judicial scrutiny. So if judicial scrutiny is not done from the parliament, Supreme Court or either any high court is there, that would be working into it. So we have to understand that the presumptions of constitutionality need to be taken into consideration before any law that come into the action. Now redemying the dysfunctions, किस तरह से रेडमी को एक इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, हाउ वी कैन फॉलो दिस अप. तो सीजीआई ने सजेस्ट किया है कि जो लेजिस्लेशन है दैट कैन बी फॉर्म्ड विद इन द एडमिटली आइडियल सोल्यूशन एंड रेडीमाइंग द लेजिस्लेटिव डिसफंक्शंस, राइट, जिसने कंसर्न रेज किए रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ पावर. सो वी नो दैट द पावर एग्जिस्ट, वी हैव अदर बॉडी, even in states we have parliamentary committee which look into the consideration before any bill is being passed. So Indian judicial system has been demonstrated as a possible way enrich in the democracy, और जो excessifying dysfunction है उसको किसी और institution से replace भी नहीं की जा सकती है. So even the court in the country can play a very vital role. And by adopting the swift and systematic approach and legislative process, judiciary can help to restore the faith. अभी भी individual हर एक citizen जो country is considered judiciary as a temple of democracy basically, and push towards the culture justifying the cautions and create this as a, and restoring the point would be very important, right? So judiciary and parliament go parallelly basically in terms of welfare of the people, but this is a time
where the government need to take into consideration that whatever they're coming with the law is benefiting the mass of the people, right? So masses ko benefit karna would be something that is very important. Now, moving to the MCQ questions of the day. Before I proceed with the question, just to tell you the answers of yesterday questions. That is for the Saturday. For the first question, the correct option is A. For the second question, the correct option is B. Today's MCQ, Corruption Perception Index, is released by Corruption Eradication Commission, and India has been ranked slipped with 86 among 180 countries in the CPI. So what you have to do, you have to choose the correct options and write that in the comment section down below. Second, which of the city in India has regarded as the tree city status? Indore, Bangalore, Hyderabad, or New Delhi? So what you have to do, you have to choose the correct option and write that option in the comment section down below. So do let me know which among the following is the correct option. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.